I'm right now in Bagunda village in Kumbhalgarh, Rajasthan. There's some wonderful work which is being done by the CSR arm of Larsen & Toubro, and I will bring those stories to you through the beneficiaries and also through our partner, Seva Mandir. मूला है, टमाटर है, गोभी भी है, धनिया है और वो पालक है और गाजर है, प्याज रोप गिदा है. L&T initially thought that we will work in the place which is water stress, and not working in Rajasthan will be an irony. During the DPR, we got to understand the topography of the villages. So the idea was to just slow down the runoff of water from the hills. So there we have constructed stone structures, loose stone check dams are there, gully plugs are there. So that will slow down the runoff of water. यहाँ पे एक एनीकट जो है गवर्नमेंट ने 40 साल पहले बनाया था, उसमें पानी निकलने का प्रॉब्लम था, तो हमने L&T के सहयोग से इसमें उस एक हेड वॉल जो है RCC का डाला, जिससे उसमें जो पानी का जो लीकेज का प्रॉब्लम था वो रुक गया और अभी इसमें लगभग 6.5 मीटर के आसपास इसमें पानी भरा हुआ है. 5 कुआं का वो मरम्मत करवाया गया है. पहले पानी कम था, अब वो सुरक्षित भरा हुआ है और उस जल का उपयोग करने के लिए लोग सब्जी है, ऐसे कोई फलदार पौधे हैं और बाड़ियाँ, अमरूद की बाड़ियाँ ऐसे लगा रहे हैं. When the water was created enough, we thought about we can talk to the farmers about the agricultural practices. प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले जब हम ये मेडो वाला कॉन्सेप्ट लेके आए थे जो गुआवा के ऊपर बेस्ड था, तो विलेज से हमको एक रेजिस्टेंस मिला था. पीपल वांटेड कि उनके यहाँ पे मैंगो ट्री का प्लांटेशन किया जाए क्योंकि वो लोकल स्पीसी है. बट हमारा आइडिया ये था कि मैंगो का फ्रूटिंग 2 साल के अंदर एक बार होता है, गुआवा का 1 साल में 3 बार. तो देयर वाज अ डिफरेंस. तो हम लोगों ने थोड़ा परस्यू भी किया, थोड़ा इंसिस्ट भी किया, एंड जब हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कुछ फार्मर्स के साथ जो कीन थे करने के लिए, उनको देख के और फार्मर्स भी आ गया व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग द बेनिफिट. We proposed 2 interventions. So for out of school children, we proposed a residential camp where we would call the children to our place, and there are dedicated teachers, and since it is a residential facility, children stay there for 6 months. We rigorously work with them, we enhance their learning levels, and then we enroll them into government schools. We have worked with the 15 government schools and around 21 Anganwadis in this location. We found out that many of the girls, especially when they reached to class 8th or 9th, they were dropping out because there were not proper sanitation facilities, and so girls were dropping out. So in the project we have constructed toilets in the schools. So we did a survey and we saw which toilets are defunct in government schools, and accordingly we have constructed separate toilet for boys and girls. Very few household had toilets made by government, but those were defunct. I can tell you, like, you can imagine from this thing that there are almost 2,000 families in these 10 project villages, and out of 2,000 families we have constructed 750 toilets. टॉयलेट के साथ में बाथरूम भी साथ में था दोनों, जिससे क्योंकि महिलाओं को टॉयलेट के साथ में उनको नहाने का भी दिक्कत था, तो वो दोनों तरह का सोच के उसको हमने ब्लॉक्स को तैयार किया. So we worked very closely with 60 women SHG groups, where more than 600 women are with our group, and they have formed a federation. All the women will have equal right and equal say in the development decisions of the village. So, and the functioning committee, they have total 11 members, and in which there is equal representation of women as well. And prior to the project, women would not sit with the men, so they have a different place to sit and they would not give their opinion about anything. But now after the project, since we started talking with these people, now women and men are sitting on the same platform, and women are equally raising their voices and giving their opinions. इनसे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जैसे घास मिल रही है, सीताफल के लिए ये है, आम के पौधे हैं, महुए हैं, तो बहुत सुरक्षित हो गए. इससे गांव को हज़ारों रुपए की वो आवक हो गई है, और ये जो व्यापार लैंड के लोग हैं उनको ये काम करने का एक जरिया मिल गया है. ये बहुत ही अच्छा हुआ है. ये सेवा मंदिर और L&T के प्रभाव से जो हो पाया, ये बहुत ही अच्छा है. Now they have sufficient water for their livestock, the sanitation, their agriculture, drinking purposes, everything.